This one is the life cycle of angiosperm. Angiosperm is a flowering plant. It means all flower bearing plant is known as angiosperm. These are the dominating plant. What is the reason behind this dominance? It means it may be herbs, shrubs, or trees. It has well developed conducting tissue, and second one, it has various ways of pollination. Bisexual flower also present in this angiospermic plant. Young ovules are protected by ovary, and after fertilization, seeds are protected by fruits. And to ensure effective disposal, seed are disposed by agencies of wind or water or animals, etc. And a large number of angiosperms propagate vegetatively. These are the factors for dominance of angiosperms. Development of flower and fruit in angiospermic plant is specific. See, this one is the dicot plant, and it is flowering plant. This one is the flower. Flower is a modified stem. What do you mean by flower? It means flower has फोर वर्ल्ड, एसेसरी वर्ल्ड एंड नेसेसरी वर्ल्ड. नेसेसरी वर्ल्ड में आ जा रहे हैं आपके ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इट मीन्स कार्पल एंड पिस्टल. एंड सेकेंड वन इज स्टेमन. स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड कार्पल एंड पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड these are the necessary world and accessory worlds में stamen and stigma. What do you mean by stamen and pistil and petals and sepals? Sepals, see here, this one is the thalamus, and this one is the female reproductive part, that is known as carpel or pistil. See this one, and this is the male reproductive part. The other name of this male reproductive part is known as the stamen, which is made up of filament and anther. And this one is the carpel or pistil, made up of three part. By three part, first one is the stigma, this one is the upper part, and the style, this is the long elongated part, and this one is the ovary. Inside this ovary, ovule is present. See here, inside this ovary, ovule is present. Inside this ovule, embryo sac is present. This one is the embryo sac. Embryo sac is present. These are the necessary world of flowering plant. And accessory world, this one is the green leaf-like structure which protect flower at the bud stage. That single is known as sepal, and प्लूरल होगा जब ये सब मिल के हो जाएंगे तो उनको कहेंगे कैलेक्स. और दूसरा आ जा रहा है कलर्ड पार्ट, दैट सिंगल इज नोन एज पेटल, और प्लूरल इसका हो जाएगा कोरोला. तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम. और कैलेक्स, कोरोला, जो कार्पेल और पिस्टल और स्टेमन, these are the male reproductive part. Male reproductive and female reproductive part has a specific structure that is known as anther, and inside this ovary cell undergo meiosis division and form and inside the anther microspores, which is haploid in nature. These are also known as pollen grain. And inside the carpel undergo one megaspore mother cell undergo meiosis division and form and embryo sac. Embryo sac is 8 nucleated and 7 celled stage. What is the reason behind this 8 nucleated and 7 celled stage? After meiosis division, 8 cells is present, and 3 cell is the which is away from this egg apparatus is known as antipodal cell. 2 central cell is, 2 central nuclei is present, and 2 synergid cell is present, and 1 egg apparatus is present. So see here, this one is the embryo sac, and 3 nuclei or 3 cell present here. 2 nuclei, but 2 nuclei form single cell, and 1 nuclei, 2 nuclei, मतलब 1 and 2 and 3 nuclei also present. यानी 1 cell which has single nucleus, ये nucleus, ये nucleus, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने न्यूक्लियस हो गए? 8 न्यूक्लियस हो गए, यानी उनको मिला के प्लूरल में न्यूक्लियाई. और सेल कितनी हो गई? एक ही हो गई, एक ही. 3 हो गई एंटीपोडल सेल, 2 हो गई सिनर्जिड सेल, 1 हो गई एग apparatus, और 1 हो गई पोलर सेंट्रल सेल जो हो गई. तो यानी 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज हो गई किसकी? एम्ब्रियो सेक की एंजियोस्पर्म्स में. आफ्टर द पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन यानी किसी भी एजेंसी से का एक जगह से दूसरी जगह यानी ले जाना फ्लावर में पॉलन रेन को, ये कहलाता है पॉलिनेशन. एंथर, एट द टाइम ऑफ एंथर्स बर्स्ट इट रिलीज पॉलन, एंड पॉलन
come to stigma. This is known as pollination. After pollination, pollen tube, this one is the pollen grain. Pollen grain has two layer, exine जो कि बाहरी spiny सी बनी है, that is known as exine. Exine, it is made up of sporopollen. It is very tough covering and keep pollen grain in the form of fossil. Inside this another layer also present, that is known as intine. It is made up of cellulose. ये cellulose की बनी होती है. And inside this intine यानी intine के अंदर एक लेयर होगी which has two nuclei. First one is the tube nucleus and second one is the generative nucleus. Generative nucleus again divide and form two male nuclei, दो मेल गैमीट बनाकर. और पोलन ट्यूब न्यूक्लियस का काम क्या करेगा, जैसे ही ये पोलन ट्यूब यहाँ पर पहुँच गया, पोलन ग्रेन यहाँ पर पहुँच गया, ये ट्यूब निकालने लगता है पोलन ट्यूब, और कहाँ ले जाता है, इस एंडोस्पर्म के पास तक. ये देखिए पोलन ट्यूब निकल रही है, एंडोस्पर्म के पास तक पहुँची और दो गैमीट फ्यूज़ हुए. यहाँ पर ये गैमीट क्या करेगा, एक गैमीट जाकर जैसे ये एंटर करा देगा, सिनर्जिट का काम होता है इसको एंटर कराना, जैसे ही एंटर करा देगा सिनर्जिट ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ एग एपरेटस बचेगा जो कि एक मेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करेगा. यानी एक मेल गैमीट जो कि एन था और सिनर्जिट के पास भी एन सेल थी, तो कितनी हो गई 2n, यानी इट फॉर्म्स जाइगोट. जाइगोट ये बनेगा, एग एपरेटस प्लस वन मेल न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन से जाइगोट बन रहा है. जाइगोट अंडरगो माइटोसिस डिवीजन एंड फॉर्म डिप्लॉयड embryo. This embryo develop and form sporophyte plant. And second polar nuclei fuse with these polar nuclei. ये दो polar nuclei हैं, यानी N हो गया एक, दूसरा N polar nuclei और तीसरा ये male gamete जुड़ गया आके. It forms 3N. It means this forms endosperm. Endosperm has food for this developing embryo. Developing embryo के लिए endosperm food रखता है. This one is also known as triple fusion. इसको triple fusion भी बोलेंगे. And two male nuclei fuse with two male gamete. That's why it is known as double fertilization. See here. ठीक है. The one other male gamete यानी one of the male gamete fuse with egg cell to form zygote. That is known as syngamy. And the other male gamete fuse with the diploid secondary nucleus to produce the triploid primary endosperm. This one is the प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3N बना. दिस इज नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बिकॉज इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन.